अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। उरहिबु बिकुम फ़ी फ़स्ल लुग़ा अल अरबिय्या। इंशाअल्लाह फ़ी हाज़ल वीडियो सनुतर्जिमु बअज़ल जुमल फ़िल लुग़ा अल अरबिय्या। अव्वलन इंशाअल्लाह सनुतर्जिमु मिनल लुग़ा अल अरबिय्या इलल लुग़ा अल इंग्लिज़िय्या व बअद ज़ालिक मिनल लुग़ा अल उर्दिय्या इलल लुग़ा अल इंग्लिज़िय्या। ताल नब्दा। अन-नुज़हतु फ़ी सबाह, the picnic in the morning. खरजना इला हदीक़तिन लिन्नुज़हति फ़ी सबाह. We went out to a garden for picnic in the morning. فدخلناها, so we entered in it. وجلسنا تحت شجرة عند الماء, and we sat under a tree near the water. وَنَظَرْنَا إِلَى أَزْهَارٍ جَمِيلَةٍ, and we looked to beautiful flowers. وَفَرِحْنَا بِهَا, and we became happy with them. فَنَهَضَ أَحَدٌ مِّنْ أَصْدِقَائِنَا, one of our friends got up. وَذَهَبَ إِلَى الْأَشْجَارِ, and he went to the tree. وَقَطَفَ مِنْهَا زَهْرًا وَفَاكِهَةً أَيْضًا, he plucked from it a flower and a fruit also. أَنَا مَنَعْتُهُ وَالْأَصْدِقَاءُ أَيْضًا مَنَعُوهُ, I stopped him and friends also stopped him. لكن ما رجع عن فعله, but he did not stop from his work. فبعد قليل, after some time, ظهر صاحب الحديقة وسأله, the garden owner appeared and asked him, لماذا قطفت الفاكهة, why did you pluck the fruit? وأكلتها بغير إذن, and you ate it without the permission. أأذنت لك, did I permit you? أنا ما أذنت, I did not permit you. ثم أخذه وضربه, then he took him and beat him. يا أصدقائي, أخذ شيء بغير إذن عادة مذمومة. My dear friends, taking anything without the permission is bad habit. أسئلة, question. إلى أين خرج الأولاد, to where did the boys go? متى خرجوا, when did they go out? أين جلسوا, where did they sit? بأي شيء فرحوا, with which thing they became happy? من قطف الفاكهة, who plucked the fruit? أما منعه أحد, did anybody did not stop him? قطف الولد زهرا بإذن, did the boy pluck a flower with permission? من ضربه, who beat him? أضربتم أحدا, did you beat anybody? أدخلتم حديقة بغير إذن, did you enter any garden without the permission? أخذتم منها شيئا, did you take anything from it? Now we are going to translate Urdu sentences in English language. मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी. I did not permit anybody. उस्ताद ने शरीर लड़के को मारा. The teacher beat the naughty boy. क्या तुमने किसी को नहीं मारा? Did you not beat anybody? हमने अब तक किसी को खैर से मना नहीं किया. We did not stop anybody from good deed. बगैर इजाज़त हम किसी के घर में नहीं गए. We did not go to anybody's house without the permission. तुमने लाल फन्नी ली. You took red twig. हमने पीले मौज लिए. We took yellow bananas. मैंने बहुत फूल तोड़े. I plucked much flowers. हम आपकी गुफ्तगू से बहुत खुश हुए. We became happy from your
कन्वर्जेशन। लड़कों ने ये सबक अच्छी तरह याद किया। द बॉयज़ बाय हार्ट दिस लेसन वेरी वेल। उन्होंने दीन को भी समझा। दे ऑल्सो अंडरस्टूड द रिलीजन। दीन आसान है, मुश्किल नहीं। द religion is easy, not difficult. If you want to conjugate any verb, if you want to learn any sentences, please comment it. For watching the videos, thank you very much.